Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel, that is Ideal Other Science. As per our previous video, we are preparing for BPSC TRE 4.0 exam and our target is BPSC TRE 4.0 upcoming exam. And in this video, we read the science chapter NCERT based book, and at last video we have completed the chapter number 6, that's name was tissues, and today we will read the summary of this chapter. That chapter name is motion, it means gati. So guys, let's start to read and understand. Let's start to read the summary of this chapter. That's name is motion. You can look here guys, here is the written what you have learned. It means summary of this chapter. As we know that NCERT giving us at the last of every chapter as a summary one liner points, and here is given first line and try to understand in English, try to understand in English and try to understand in Hindi. First line is given here, and what is written here? Here is written motion is a change of position. It can be described in terms of the distance moved or the displacement. It means motion is a change of position, यानी स्थिति में परिवर्तन एक गति है. गति क्या है? स्थिति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पोजीशन. इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट. इट मीन्स इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रूप में इसकी व्याख्या की जा सकती है. नेक्स्ट लाइन इज गिवन हियर इन इंग्लिश, एंड व्हाट इज रिटन हियर? हियर इज रिटन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग. इट मीन्स गाइज, एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, यानी वेलोसिटी पर निर्भर करता है, जो कि नियत है या बदल रही है, वो कांस्टेंट है या चेंजिंग हो रही है, उसकी वेलोसिटी पर निर्भर करेगा. नेक्स्ट लाइन गिवन हियर इन इंग्लिश, एंड थर्ड पॉइंट इज गिवन हियर इन वन लाइन फॉर्म, एंड व्हाट इज रिटन हियर? हियर इज रिटन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम and velocity is the displacement per unit time. And what will be the Hindi meaning of this line guys? इट विल बी, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई में हुआ स्थापन उसका वेग है, यानी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम जो होगा वो वेलोसिटी होगा और पर यूनिट टाइम जो होगा डिस्टेंस वो हमारा स्पीड होगा. चलिए, नेक्स्ट लाइन इज गिवन हियर इन इंग्लिश, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. इट मीन्स गाइज, किसी वस्तु का त्वरण यानी उसका एक्सेलरेशन जो होगा त्वरण, वह प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है. प्रति इकाई पर यूनिट टाइम में जो उसके वेग में परिवर्तन होगा, चेंज होगा वेलोसिटी में, वही हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है, यानी त्वरण है. नेक्स्ट लाइन इज गिवन हियर इन इंग्लिश, एंड व्हाट इज रिटन हियर? हियर इज रिटन गाइस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी शोन थ्रू ग्राफ्स. एंड व्हाट विल बी द हिंदी ऑफ दिस लाइन गाइस? ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है, यानी शोन थ्रो ग्राफ. ग्राफ के द्वारा किसको दर्शा सकते हैं? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ग्राफ के द्वारा दर्शा सकते हैं. नेक्स्ट लाइन इज गिवन हियर, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, नेमली v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square and 2as is equal to v square या u square, v square minus u square. यहाँ पर माइनस छुटा हुआ है, then we will put here minus, the sign of minus here, यानी v square minus u square. and what will be the Hindi? एक समान त्वरण से चल रहा एक वस्तु, एक समान त्वरण से चल रहा एक वस्तु की समान और असमान गति को, वस्तु की गति की व्याख्या निम्न तीन समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. ये तीन इक्वेशन दिए हैं, इसके द्वारा हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. पहला v बराबर u प्लस एटी, एंड सेकंड इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड इज 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. एंड इसको इसमें v u a सब क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ. लेट्स रीड इट. हियर इज रिटन वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी. u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, यानी यह हमारा क्या है? प्रारंभिक वेग है ऑफ द ऑब्जेक्ट का. विच विथ इनफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t. एक्सेलरेशन के लिए ए का यूज किया गया है, टाइम के लिए टी का. एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड s इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड इन टाइम t. इट मीन्स गाइस, जहाँ u जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग है, t समय के लिए एक समान त्वरण है, a से गति करती है, इसका अंतिम वेग भी है, और t समय में तय की गई दूरी यह s है. चलिए, लास्ट लाइन इज गिवन हियर, एंड आफ्टर दैट वी विल इन दिस summary. And what is written here, try to understand it. Here is written, if an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. It means guys, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा. यदि वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से कहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. Finally guys, we have completed the summary of this chapter name was motion, and now we will look some important points, and after that we will in this video.
Look guys, here is written uniform motion and non-uniform motions. About uniform motion and non-uniform motion, here is written, consider an object moving along a straight line. Let it travel 5 meter in the first second and 5 meter more in the next second, 5 meter in the third second and 5 meter in the fourth second. In this case, the object covers 5 meter in each second. As the object covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. इसी को हम uniform motion कहते हैं. The time interval in this motion should be small. In our day-to-day life, we come across motions where objects cover unequal distance in equal intervals of times. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park. These are some instances of non-uniform motion. And guys, what will be the Hindi meaning of these lines? एंड यहाँ लिखा हुआ है जो कंसीडर यानी माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है. माना पहले एक सेकंड में वह 50 मीटर चलती है, यहाँ पर 5 मीटर चलती है, और दूसरे सेकंड में वह फिर से 5 मीटर चलती है, और तीसरे सेकंड में फिर से वह 5 मीटर चलती है, चौथे सेकंड में फिर से वह 5 मीटर चलती है. इट मीन्स इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है. क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहेंगे, यानी यूनिफॉर्म मोशन उसको कहेंगे, क्योंकि एक समान गति वो गति तय कर रही है. इसी तरह गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए. हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है. उदाहरण के लिए यहाँ पर एग्जांपल में क्या बताया है, व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, दीज आर सम इंस्टांसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसका मतलब हो गया कि भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति एक असमान गति के कुछ उदाहरण हैं. सम इंस्टांसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Look guys, here is written the formula of average speed, and average speed is equal to total distance traveled divided by total time taken. If you know total distance traveled and what is total distance traveled and what is total time taken, you can find out the average speed of that question. And at the last, guys, here is written about uniform circular motion. And what is written here? Here is written, when the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. The changes in the velocity could be due to change in its magnitude or the direction of the motion, or both. Can you think of an example when an object does not change its magnitude or velocity but only its direction of motion? Here is 4 diagram is given here. The motion of an athlete along closed tracks of different shapes. फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर ट्रैक पर वो रन करेगा. सेकंड इज हेक्सागोनल ट्रैक, इसमें हेक्सागोनल ट्रैक है यानी इसमें कितने हैं टोटल 6 इसकी भुजाएं हैं. और थर्ड इज ऑक्टागोनल शेप यानी इसमें 8 भुजाओं वाले ट्रैक पर गति करेगा. एंड लास्ट इज सर्कुलर ट्रैक. And what is written about it? Here is written A, B, B, C, C, D and D of the track. In order to keep himself on track, he quickly changes his speed at the corners. How many times will the athlete have the changes his direction of motion while he completes on round? It is clear that the move in a rectangular track once he has changed his direction of motion 4 times. Now suppose instead of a rectangular track the athlete is running along a hexagonal shaped path A, B, C, D, E, F. यानी A, B, C, D और E, F. इसमें देखिए A, B, C, D और E, F. इसको इसमें 8 बार अपना जो है ट्रैक वो राउंड चेंज करना पड़ेगा. Here is written as shown in figure number 7.9b में. In this situation the athlete will have to change his direction 6 times. यहाँ पर आपको 6 टाइम, क्योंकि ये यहाँ पर हेक्सागोनल ट्रैक है इसलिए इसको 6 टाइम यहाँ पर अपना ट्रैक चेंज करना होगा. और इसमें आपको 4 टाइम ट्रैक चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है. यहाँ पर जैसे यहाँ से शुरू करेगा, एक बार यहाँ पर घूमेगा, फिर यहाँ पर घूमेगा, फिर यहाँ पर घूमेगा, फिर यहाँ पर घूमेगा. Then next line is given here. It is observed that as the number of sides of the track increases, the athlete has to take turn more and more often. What would happen to the shape of the track as we go on increasing the number of sides indefinitely? If you do this, you will notice that the shape of the track approaches the shape of a circle and the length of each of the sides will decrease to a point. If the athlete moves with a velocity of constant magnitude along the circular path, the only change in his velocity is due to the change in the direction of motion. The motion of the athlete moving along a circular path is therefore an example of an accelerated motion. We know that the circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r. If the athlete takes t second to go once around the circular path of radius r, the speed v is given by v is equal to 2 pi r by t. Now guys, we have understood what is the uniform circular motion and what is the helpful for your work. And now we will end this video and we have read out the summary of this chapter and we have read out the noted point. And next video we will read about chapter number 8, that is force and laws of motion. It means बल तथा गति के नियम. Finally guys, if you like this video you can like and subscribe my channel and share this video. So thank you so much.